Good morning to you students. This is the third part of chapter 14. Today we are going to study about more events which occurred in the process of India's struggle for freedom. So in the year 1905, finally British divided the Bengal into two parts, which was known as with the title partition of Bengal. And these two parts were East Bengal and West Bengal. The reason given by the Britishers was this: the size of Bengal was very big. It was equal to the size of France, and the population which was living in the Bengal province was more than the population living in the France. So Britishers gave this reason to the public of the Bengal for division of it. But the real motive behind the partition of Bengal was to divide the unity between Hindu and Muslims. रियल कारण बंगाल को बांटने का दो टुकड़ों में ये था कि वो हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी, एकता थी, उसको ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने के बाद बंगाल पे रूल करना बहुत इजी हो जाता. एंड वन मोर रीज़न वॉज देयर: बंगाल प्रोविंस वॉज द हब ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से मूवमेंट चल रहा था आज़ादी का, वो बंगाल में ही चल रहा था. एंड एट दैट टाइम बंगाल वॉज हैविंग द प्रेजेंट डे Bihar, Odisha, Jharkhand, then West Bengal, and the Bangladesh. This Bangladesh was the eastern part of the Bengal, including Assam and some areas from Chhattisgarh as well. So these 4-5 states were were in the British Bengal, or we can say Bengal province. Then finally, what happened after this डिसीजन वॉज इम्प्लीमेंटेड? जब बंगाल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया तो क्या हुआ? कुछ इंडियंस ऐसे थे जिन्हें ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा, और उन्हें ऐसा लगा कि नाउ दी ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू डिवाइड अस ऑन रिलीजन बेसिस, कि ब्रिटिशर्स तो अब हमें धर्म के अकॉर्डिंग में बांटने की कोशिश कर रहे हैं. नाउ वी नीड टू प्रोटेस्ट देम वेरी नाइसली. अब हमें इनके अगेंस्ट बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट करना होगा. देन दे केम अप विद द आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट. And now the things were going to change. Swadeshi and boycott movement. Let us move towards boycott and Swadeshi and boycott movement continued for 3 years. And according to Swadeshi movement, Indians were encouraged to use the goods which were manufactured in India only. They were asked to boycott all the goods which were manufactured in England or any part of the Europe. So ऐसे goods, ऐसे products जो इंग्लैंड में या फिर किसी भी हिस्से में यूरोप के बनाए जा रहे थे, उन्हें यूज़ करने के लिए बंद करने के लिए कहा गया. उनको बेसिकली यूज़ नहीं करना था द प्रोडक्ट्स विच वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड और अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप. पीपल वर इंकरेज टू गिव अ ब्रिटिश जॉब्स, टाइटल्स, कॉलेजेस एंड स्कूल्स. इंडियंस को ये भी कहा गया कि आप ब्रिटिश जॉब्स छोड़ दीजिए, और जो भी टाइटल्स उनके द्वारा दिए गए हैं उनको भी आप छोड़ दीजिए. देन कॉलेजेस एंड स्कूल्स वर ऑल्सो, स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टॉप्ड विजिटिंग दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस विच वर ओपन बाई द ब्रिटिश people. British goods were publicly burnt. So the goods which were manufactured by the British, they were burnt in the bonfires. And Vande Mataram became the song to unite people against the partition in Bengal. So Vande Mataram सॉन्ग बना लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों को एक करने के लिए इस पार्टीशन के खिलाफ. एंड स्लोली इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन द एंटायर कंट्री. Then what was the result of this movement? Many textile mills, handloom units and the matchbox factories were opened in Bengal to produce goods to meet the needs of the Indian people. So because Indians were boycotting or not using the products which were made in England or other parts of the Europe, सो दे नीडेड टू यूज़ समथिंग. कुछ तो उन्हें यूज़ करने के लिए चाहिए था. इसी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ इंडियन लीडर्स ने और जो भी एंड सम रिच इंडियंस दे ओपन सम factories in the Bengal like textile mills, handloom units, matchbox factories to meet the needs of the Indian people. And at the time of partition of Bengal in the year 1905, there were some Indians which got really irritated by this decision and armed revolutions by Indians began. Armed revolution means Indians started using weapons against the Britishers like guns and swords because they were not listening because they were not listening the request of the Indians. Even Indian National Congress group was formed before the partition of Bengal, and this group was formulated to get the India independent step by step. उन्हें लगा था कि शायद ऐसा होगा that Britishers will listen them and will pay attention towards the demands which were made by them, but ऐसा कुछ नहीं